घेऊ का थोडी घ्यायची गाडीवर गाडी त्रास होतो तुला नाही तुम्हाला देऊ का वो थे धीरूभाई अंबानी। जी हाँ, 1983 के आसपास की बात है। धीरूभाई अंबानी का जब पहला इशू आया था तो स्टॉक मार्केट घर घर में पहुंचा, घर घर में शेयर्स पहुंचे रिलायंस, और उसने फिर जनरेट किया। हम उस समय से बाजार में हैं, लेकिन एज क्या थी? 13 साल, जस्ट 13 साल। लेकिन जानते थे, जानना चाहते थे और मजा लेते थे स्टॉक मार्केट। वो टाइम था जिसके एक साल बाद में 1984 अक्टूबर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई देश में। इंदिरा गांधी का डेथ हुआ। इंदिरा गांधी जो मानी जाती थी इंडिया इक्वल टू इंदिरा, हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि स्टॉक मार्केट को 15 दिन के लिए बंद करना पड़ा। आज तक 2022 में हम बैठे हैं, कभी ऐसा नहीं। जी हाँ, मार्केट में कोई बायर नहीं था। फिर राजीव गांधी की ताजपोशी हुई और उसके बाद में जब बाजार खोला गया तो भी इतना जबरदस्त सेलिंग प्रेशर था कि कोई बाहर नहीं था। तो गवर्नमेंट ने एफआईज इंस्टीट्यूशंस उस समय नहीं हुआ करती थी, सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, एलआईसी और यूटीआई। इन दोनों को खड़ा किया और बाई की, और 5 दिन तक रेगुलर इन्होंने 100 करोड़ की शॉपिंग की। तब जाके बाजार स्टेबलाइज हुआ और यहां से स्टार्ट होता है एक बहुत बड़ी जर्नी जिसने हमें बहुत पैसा दिया था। ये वो जगह था जब हमने जो भी शेयर लिया, देयर इज नो प्रॉफिट टेकिंग एट ऑल, जैसा कि आपने रिसेंटली इस 2020 के क्रैश के बाद में कोई प्रॉफिट टेकिंग। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चला। जुलाई 1985, जी हाँ, जुलाई 1985 को जो 250 सेंसेक्स हुआ करता था वो 570 सेंसेक्स, जी हाँ दोस्तों, सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, निफ्टी की नहीं। ये 570 सेंसेक्स जो आज 60,000 चल रहा है, वहां जाके टॉप बना और अगले 3 साल तक एक लंबी मंदी चली। ये वो समय था जिस समय हमें ये डिफाइन करना मुश्किल हो गया कि क्या स्टॉक मार्केट एक वाइबल बिजनेस रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप सीखेंगे आप जानेंगे ये था, है और रहेगा, शाश्वत है। जी हाँ, 1988 की बात कर रहा हूं। यहां फिर से हर्षद मेहता की बुलंद स्टार्ट होता है और यहां से यहां तक का दौर जो था वो मनु मानक का जो दौर था। ये वो प्लेयर थे जो सबसे बड़े प्लेयर थे। और उस समय की यदि मैं बात करूं, हम ये कोशिश किया करते थे किसी भी तरह से मनु मानक से कोई कांटेक्ट बैठ जाए, कोई सर सेटिंग बैठ जाए तो हम भी उनके साथ कमा सकें। कुछ सोर्सेस से हम उनके साथ कनेक्ट भी हुए, लेकिन धीरे धीरे 1988 के बाद में हर्षद मेहता का टाइम हुआ और बुल फेज स्टार्ट हुआ। और ये जो बुल फेज था, जिसको हम जानते हैं, लेकिन ऐसा न मानिए कि ये भी इतना इजी था। 1991 ये वो समय था
राजीव गांधी का ऑल ऑफ सडन डेथ हो गई। सोचिए क्या पोजीशन रही हो। लेकिन ये स्टॉक मार्केट है, हमेशा था, है और रहेगा। हमें यहाँ चिंता की जरूरत नहीं है। उसके डेथ के बाद भी स्टॉक मार्केट तक चलता रहा और 4500 जो 1985 का सेंसेक्स 560 था, वो 4500 1992 हर्षद मेहता के टाइम पे टॉप पर। 1993 बॉम्बे बम ब्लास्ट, लेकिन बाजार कुछ समय के लिए खराब हुआ, फिर ठीक हुआ। लेकिन हमने जो सबसे ज्यादा पैसा कमाया, वो कमाया था 93 94 के आईपीओ बूम में। जी हाँ, डेली आईपीओ, महीने के 50 आईपीओ, 100 आईपीओ, और हम लगाते थे एप्लीकेशन और पैसा कमाते थे। तो इतना मेडरस जो आज तक आप
Anyway, it's not an issue. Online students able to hear me? Yes, sir. इसके वॉल्यूम को क्या करना है? Online students able to hear me? Yes, sir. Okay. आज सभी को वही लग रहा था सुबह से कि पुट ही जाएगा, बट पुट इतना लिमिट में नहीं गया। आज एक्चुअली फ्राइडे को दोनों साइड से प्रीमियम डैमेज किया, कभी ऊपर कभी नीचे करके। मोस्ट ऑफ द सेलर्स विल बी ट्रैप्ड, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि कल मतलब वहां पे नैस्डैक गिर गया 500 पॉइंट, तो हमारा भी उतना ही जाना चाहिए, बट लास्ट में थोड़ा रिकवरी दे दिया। दैट्स वेयर एक्चुअली पीपल गॉट ट्रैप्ड। बैंक निफ्टी, इट्स दैट्स व्हाई गेटिंग टू मच डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट समटाइम्स। पता ही नहीं चलता है कि कौन सा करे। इवन मेरा भी आज सुबह वही हुआ, 1500 माइनस में चल रहा था, ऐसे ही गलती कर दिया, जल्दी खुलते ही पुट ले लिया। वो इमोशंस आ जाते हैं ना कहीं से, तो दैट्स वेयर, बट समवेयर आई वाज लाइक कॉन्फिडेंट कि नहीं आ जाएगा। इस साइड 1500 के निकल लिया, बट इट टुक टाइम दिस टाइम। 1.5 घंटा वेट करा, वो पेशेंस नहीं आता है। फिर प्रॉब्लम ये है, अगर मल्टीपल लॉट्स होते ना वहाँ पे, तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस को कब का हिट हो गया होता। मल्टीपल लॉट्स इसलिए मना करता हूँ, एटलीस्ट इन सिंगल लॉट यू विल बी एबल टू विथस्टैंड 100 पॉइंट्स। यहाँ पे तो 10 पॉइंट में तो हालत खराब हो जाएगी। Yesterday we have completed SBL, right? Stock borrowing and lending and all this things. ठीक है, आज कोलेटरल ही कर लेते हैं। कोलेटरल इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। उसके बाद BSc and ऐसी खराब मार्केट में भी कुछ कुछ स्टॉक्स पॉजिटिव्स रहते हैं, सो डोंट एक्सपेक्ट कि एवरी स्टॉक इज गेटिंग थ्रेश्ड डाउन। देयर विल बी फ्यू स्टॉक्स व्हिच विल बी स्टिल परफॉर्मिंग बेटर इन दिस नेगेटिव मार्केट। कल आपका सेशन नहीं हुआ था ना? सी लेवल 2 अगेन आई एम रिपीटिंग, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, ठीक है। इसमें थियरीज कम है। आई विल रेकमेंड कि लेवल 2 की हो सके तो प्रिंट आउट्स निकल के ले लो, इट विल बी इजी, क्योंकि वो फिर आपको लिखना इतना सारा डायरेक्टली, फिर वो मार्कर से हाईलाइट ही कर दो टू सेव योर टाइम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ऐसे स्क्रॉल करूंगा ना, कहीं पे भी यू विल नॉट फाइंड देयर इज एनी प्रैक्टिकल थिंग दैट आई विल बी एबल टू, प्योर थियरी है। सर इंटरव्यू में भी लेवल 2 के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं कि लेवल 1 के ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? It will depend on which type of role is being coming for. Otherwise, I'm not sure कि level 2, but हाँ level 2 is important more from the administrative functional perspective
and also if you are joining any such roles in the organizations. मतलब ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. Of course, the company will be providing trainings to you, but then it will be your responsibility कि अभी के लिए थोड़ा basics आपको clear होना चाहिए. Otherwise, these concepts are very easy. जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड है तो उनके लिए तो बहुत इजी होगा. कोलैटरल्स तो पता होंगे. Yes, sir. ठीक है. हाँ, तो that is where we are working on all these things. ठीक है. So what is collateral? Anyone can define? Normal terms. क्या होता है collateral? So something which is kept as a mortgage. Correct. ज्यादातर बैंक्स में we find it collaterals, right? Additional mortgage or security which will be provided against the liability that we are taking from the bank. Okay. So of course this is an age-old concept in financial industry, which means providing security. Now security in form of, it can be property. If you are buying a flat or a residence or any whatever real estate you are buying, that entire thing will get mortgaged against the loan or the housing loan which you are taking. It can also be cash. For example, FD है, तो FD के सामने if you are taking any loan, gold loan we already know, and securities, any other securities, मतलब अगर stock market के portfolio है आपके पास, you can surrender it to the bank as your mortgage or as your collateral, and against that you can buy your against that you can get your loan. Okay, so in all these forms this will be provided as collateral against the possible payment default. Why? The bank will require this as collateral in the case if we are not repaying our bank loan, then bank will seize that particular property or cash or gold or any other securities that we have surrendered. नीलामी कर देंगे, right? In other words. Okay, salient features of collateral are guarantee. So it is used as guarantee that the obliged cash will be paid at the predefined time. Credit enhancement, it helps the firm to mitigate the credit risk by accepting equivalent value of assets and managing crisis. It helps to manage and overcome the crisis like economic, currency, or failure of market participants. So basically, why collateral is being important? To manage any type of credit risk or any external foreign market crisis. We have seen that example of Lehman Brothers, right? Of 2008. वहाँ पे सेम चीज हुआ था. कोलेटरल इतना प्रोवाइड कर दिया था, अब कोलेटरल का वैल्यू ही नहीं रहा, ऊपर से सिक्योरिटाइजेशन किया उस कोलेटरल का, तो वैल्यू ऑटोमेटिकली टर्न टू जीरो, एंड बिकॉज ऑफ विच मॉर्गेज क्राइसिस और दैट इट इज आल्सो नोन एज व्हाट लेंडिंग क्राइसिस, कुछ तो नाम है उसका, सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस. यस, हाँ, दैट इज हाउ इट इज नोन एज. ओके. Purpose of collateral, a credit enhancement technique allowing a net borrower to receive better borrowing rates or haircut margin. Okay. A credit risk mitigation tool for private or OTC transactions will offset the risk that the counterparty will default on all the deal obligations. It is applied to secure individual deals or entire portfolios on a net basis. A trade facilitation tool which enable parties to trade with one another when they would otherwise be prohibited from doing so due to the credit risk limits or regulations. So basically, what is the purpose? Just first of all, to ensure that in the case of an event of a default, the banks or any other financial institutions will be taking the ownership of that particular collateral. Okay. European pension fund regulations or Islamic banking laws are also there. Right, one question. What is Islamic banking law? You have given? Okay. What is Islamic banking law? Written, everyone? Okay. So component of firm-wide portfolio risk and risk management, including market risk, capital adequacy, regulatory compliance, and operational risk. Now, these are all the different forms of challenges which can hinder your
either the amount that needs to be repaid or any other external factors which could impact the entire liability transaction. मतलब ये हुआ कि मैंने लोन ले लिया, ठीक है, अब समझ लो कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया बिकॉज ऑफ विच आई वाज नॉट एबल टू रीपे द लोन, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं पे कर पाया, लोन डिफॉल्ट हो गया, मैं डिफॉल्ट हो गया, सब कुछ एवरीथिंग गॉट डिफॉल्टेड. नाउ इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द बैंक विल नॉट ओनली हैज टू टेक दैट रिस्क, अब बैंक का तो पैसा डूब गया. कंसिडर द केस ऑफ विजय माल्या. अब विजय माल्या की जो प्रॉपर्टीज मॉर्गेज हुई थी एज कोलैटरल, नाउ दैट हैज टू बी ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ दैट लोन अमाउंट. लेकिन दिक्कत वहीं पे आया, वैल्यूएशन ज्यादा रखा था हर एक प्रॉपर्टी का उसकी. फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक का 1000 सीआर का लोन लिया था और वैल्यूएशन कर दिया था भी 1000 सीआर, बट एक्चुअल में जब बैंक बेचने गया तब पता चला ये तो सिर्फ 400 या 500 सीआर का ही है. तो 500 सीआर किसके डूबे? बैंक के डूबे, ठीक है, लेकिन बैंक एट द एंड ऑफ कोर्स वी द पीपल, बिकॉज हमारी डिपॉजिट्स होती है ना बैंक में, तो हमारा पैसा डूबा. सो दिस इज व्हाई it's more important that the valuation of all these properties is to be carried out in a very careful way. This is why the concept of haircut margin and the discount margin was introduced. I think we have discussed that example of gold loan, right? Valuation 50,000 होता है लेकिन लोन देते हैं 35,000 के हिसाब से. This is one of the major factors that is being counted while taking a loan. Okay, a money market instrument, investment lending for short periods to earn interest on available cash or securities, a balance sheet management technique which is used to optimize bank capital by earning extra income from lending excess of assets to other institutions, and it can also work as an arbitrage opportunity through the use of tri-party collateral transactions. Now collateral can be used for balance sheet management technique or can also be used as an arbitrage opportunity just to hedge yourself, or it can also be used in the case of outsourced tri-party collateral or tri-party repo services. Tri-party मतलब 3 parties or 3 entities will be involved in a repo transaction. उसमें seller और buyer थे repo agreements में, right? Now there could be one more additional player in the market who will ensure it will. This is more of like that credit default swap. Yeah, it will be working in that manner that someone will be ensuring the amount which has been taken as a liability. Okay? But collateral की जरूरत तो फिर भी पड़ेगी. Why it has gained focus? Collateral management has become the fore as an important method of mitigating counterparty credit risk in the aftermath of the financial crisis and the bankruptcy of Lehman Brothers. ठीक है, Lehman crisis में जब सब कुछ डूब गया, उन्होंने वो sufficient amount of collateral नहीं लिया था, because of which they were not able to balance that particular financial assets which were given as loans. Okay. CM or collateral management provides the tools you need to gain a better picture of your firm's exposure, mitigate risk more effectively, and also optimize your collateral use across multiple products. The height of the focus includes repos, tri-party, multi-collaterals. Okay, now just write one thing over here. Question ये आएगा, where collateral is used across different financial instruments. Where collateral is used across different financial instruments. So then you need to write all these names: tri-party repos, collateral outsourcing, collateral arbitrage, tax treatment, cross-border, credit risk, counterparty credit limits, and enhanced legal protections. Actually, today I was going to inform you about the Deepak Nitrite. उसका पुट लेना था आज.
स्टॉक है, केमिकल का है शायद। Written everyone? Okay. Now the collateral landscape before 2008 crisis, collateral management landscape has changed rapidly. Why? Because earlier before 2008, not there were too much of concerns of default, and all the financial institutions were taking this issue very lightly. लेकिन जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तब जाके इनको पता चला कि भाई कोलेटरल मैनेजमेंट अच्छी तरीके से होना चाहिए, अदरवाइज हमारा ही पैसा डूबेगा. At the end, that bank only got closed down, Lehman Brothers. Okay, so while collateral has been always been important in the OTC transactions, remember always that thing. Why always OTC transactions में collateral चाहिए? Counterparty risk. Okay, यहाँ पे SEBI नहीं आएगा, RBI नहीं आएगा, कोई help करने नहीं आएगा. Exchange पे होता तो they will be still coming into the picture. So because of which in all the OTC transactions, this collateral has been important. Considering the global credit crisis, it has put more spotlight on the need of this particular concept, and hence people are taking more, or rather financial organizations are taking more steps towards improvisation of collateral management. Why? Because जो भी collateral ले रहे हो, सबसे बड़ा important point ये रहता है कि इसकी quality कैसी है. The quality of the financial asset which is being surrendered in the collateral. Cash होता, gold होता तो फिर भी ठीक है. Real estate or any such as financial assets that has its price getting fluctuated, ऊपर नीचे होता रहता है बहुत drastically, then it will be difficult for any financial organizations to lend money to them. Okay, तो पहले इतना ही collateral हुआ करता था, सब मिला के धीरे धीरे it started gaining importance. ठीक है, these are few other examples where like Bank of England or Oliver Wyman and all those things, they were not keeping this as collateral, but slowly with the passage of time, of course after 2008 crisis, everyone started to keep more collateral for their personal protection. Otherwise ये पहले देखो, पहले इतना हुआ करता था, धीरे धीरे ग्राफ बढ़ गया, everyone started to put it. तब जाके ये सब concepts आए थे picture, तब तक वो पहले haircut margin ऐसा कुछ हुआ भी नहीं करता था. Now the various markets where collateral is used include fixed income repo, corporate bonds, exchange traded securities, asset-backed securities, OTC derivatives, equities, bank loans, security lending, forex margin, and commodities. Okay. Now these are all the particular instruments you can say, or the financial instruments where collateral is utilized. Why? Say for example OTC derivative है और derivative में बहुत बड़ा loss आ गया, तो हमने already देखा है कि margin कितना ले रहे हैं. In the sell transaction, buy में तो जितना है उतना ही loss जाएगा. Right? One thing. Even in the bank loans, we have discussed the case. Okay, the example of Lehman crisis. Third one is securities lending, counterparty credit risk रहेगा, उसका तो वो credit rating तो नहीं निकाल सकते ना, unless and until कोई छोटा सिबिल स्कोर मिल जाए तो ठीक है, otherwise it's going to be difficult. Finally, it can include also different types of exchange traded securities, asset-backed securities, or commodities. Okay, so just write one question over here. Which are the different financial instruments or markets? Which are the different financial instruments or markets where collateral is used?
कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कोलेटरल, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कोलेटरल नहीं आएगा डिस्पाइट द फैक्ट, क्योंकि बॉन्ड्स अगर सेल कर रहे हो उसमें दो चीजें आती है, दे ऑलवेज हैव दैट क्रेडिट रेटिंग एसोसिएटेड विद देम. तो नाउ इफ आई एज एन इन्वेस्टर इफ आई एम गोइंग टू परचेज दैट पर्टिकुलर बॉन्ड, पहले तो वो मनी मार्केट है तो फिक्स्ड इनकम है, ठीक है, देयर इज नो रिस्क डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर थिंग. सेकंड, अगर गलती से भी कंपनी बंद हो जाती है तो एटलीस्ट एज अ आई एम like that I am giving a loan to the company, so I will be the first one who will be getting my money back. Interest मिले या ना मिले अलग बात है, but at least my capital will be secured. क्योंकि कंपनी डायरेक्टली ओनरशिप तो इक्विटी में तो देगी नहीं, unless and until that bond is converted into equity you will get ownership. तो शायद वो कंडीशन आ सकती है कि इक्विटी में हम ट्रांसफर कर लेंगे इन द केस इफ यू आर नॉट एबल टू गेट द बॉन्ड. Done? Now this is one swap transaction where two banks are involved for a swap transaction. Profit is being made by bank A, तो but obvious bank B will be on a loss. Swap agreement में एक ही profit कर सकता है, दोनों नहीं कर सकते. एक profit कर रहा है तो दूसरा loss कर रहा होगा, ठीक है. Now if bank A is making the profit on the swap, it will lead to a credit exposure on bank B, ठीक है. Why? Because यहाँ पे वैसे उनका loss चल रहा है और अगर वो swap agreement के हिसाब से चलते रहे तो bank B will be getting more into the loss. So what will be done over here is to mitigate the risk of bank B getting defaulted and bank A losing out also on the profits. Bank A will perform a collateral call on bank B. Okay. So for example, bank A through any other intermediary or any other channels, they will try to infuse certain amount of money to the bank B so that they will not get defaulted. Okay, for only the swap agreement. जितना लॉस हुआ है उतना ही उनको वापस देंगे, बट ऑन द कंडीशन दैट दे विल हैव टू पे बैक इन द फ्यूचर. अदरवाइज अगर मान के चलो कि 10 साल का स्वैप एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, और 10 साल मतलब बैंक भी लॉस में चलता रहा, तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट ऑन द क्रेडिट और द क्रेडिबिलिटी ऑफ द बैंक बी. तो क्रेडिट बी से वापस कहीं से तो पैसा चाहिए थोड़ा, ठीक है. नाउ फॉर दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट देयर विल बी वन इंटरमीडियरी, ज्यादातर फॉर एग्जांपल आरबीआई होगा, who will be infusing certain amount of money into bank B with an objective that they will pay in the future, and as of now will cover the losses of swap transaction. Now global collateral landscape. Collateral markets are available across various countries. Considering the different wide range of financial products available in the market, US and Canada have highly developed collateral markets that focus on cash and treasury bonds only. वहाँ पे कैश मार्केट और ट्रेजरी बॉन्ड्स के रिलेटेड ही कोलेटरल ज्यादातर अवेलेबल है. इफ यू गो टू यूरोप इट इज रिलेटेड टू फिक्स इनकम कोलेटरलाइजेशन. उसके पास फिक्स इनकम के लिए कोलेटरल का अच्छा स्ट्रक्चर है, हाउ दे परफॉर्म दैट एक्शंस. फ्रेगमेंटेड इक्विटी मार्केट्स एंड आल्सो इन अदर सेटल्ड एंड क्लियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स. यूरोप स्टिल हैज फ्रेगमेंटेड टैक्स सिस्टम, लीगल सिस्टम एंड वेरिएशंस. And in the case of any particular improper transaction, the financial entity can also go into a bankruptcy. So basically US और Canada का collateral market कहाँ पे develop है? Cash market and treasury bonds. If it is Europe, it is fixed income, it is equity market, but their tax system is very fragmented. So you will not be able to decide whether मुझे ज़्यादा tax pay करना है या कम tax pay करना है, despite the fact I am earning out of that particular transaction. Okay. Middle East is having a rapidly developing collateral market in a form which is acceptable under Sharia और Islamic law. So that is where that Islamic banking will be coming into picture. उनका एक बैंक है अलग से, पता है किसी को नाम सुना है? Islamic banking. Okay. Lending is largely illegal in Muslim countries, which includes lending securities. Under Islamic banking law, most of the deals must be fully secured with collateral to ensure that no credit is extended between the two counterparties. So in the case of a default, it might happen that directly collateral will be utilized. ठीक है, वो default नहीं होने देंगे.
and of course these countries are not believing in lending securities. Latin America in the recent times has developed collateral market but is hindered by inefficient legal systems, underdeveloped custody and IT systems, and access to quality collateral. So quality of the collateral is not good. They do not have proper IT infrastructure, and also they do not have efficient legal systems through which they will be managing collateral. Legal system क्यों चाहिए? Directly पहले केस करोगे ना, अगर कभी किसी ने पैसा नहीं दिया, आपने बहुत ट्राई किया, पैसा दे दे, नहीं दे रहा है, वो कर रहा है, then you need to have legal entities into the picture. अगर bankruptcy भी फाइल होती है, then also at that time you will need to have one particular advocate, उसका नाम है, तो we will be settling down all the particular instructions over there for the bankrupt company. ऐसे ही कोई कंपनी bankrupt हो गया और जिसका पैसा लेके चले, जो ऐसे नहीं होता है, it goes to the court, court will devise the order and that particular procedure has to be followed, तब जाके बैंक कोई भी कंपनी का bankruptcy होता है. Okay, now these are a list of different technical and legal developments. You can just write 2 to 3 anyone, any names from this, because you just need to be aware like what type of legal entities or any other such management techniques are available for managing collateral. Done. Now these are basically standards which are developed to automate your collateral transactions in the case where, for example, अगर मैं directly system में डाल रहा हूँ कि ये 10 लाख का लोन मुझे disburse करना है, तो उसके against में कितना collateral चाहिए and what type of collaterals will be accepted. Now for every country it will be having different norms, different regulatory authorities will be there. Based on that particular criteria, this EDI exchange will be working. If it is ISDA collateral asset, then of course standards will be defined for eligible collateral securities. तो ज्यादातर क्या होता है कि whenever you are working in any of the investment banks, chances are very high कि internally there will be one system established जहाँ पे आपको collateral कैसे डालना है या कितना value का होना चाहिए and which type of quality has to be there. Everything will be predefined. So if I am entering that a client is asking for around 10 million euros, तो 10 million euros के against में कितना liability as a collateral मेरे पास होना चाहिए, one thing, and what type of collateral I will accept as a part of that particular transaction. ठीक है? Who are the entities of collateral management? Of course, first will the credit analysis team. ठीक है? किसी ने देखा है गोल्ड लोन डिपार्टमेंट इन बैंक्स? ज्वेलर बैठता है साथ में. Yes. He is the credit analyst over here.
He is checking the quality of the gold instruments or the gold assets, right? Second, he is also valuing that particular thing. तो वो credit analyst ही हुआ ना, ठीक है? Researchers analysis and set collateral requirements for new and existing counterparties. Typically, this entails a preliminary review as well as ongoing periodic reviews. Of course, periodic reviews तब आएगा whenever you are surrendering any such particular asset which is having a fluctuating price. Say for example, gold or real estate. ठीक है? Then there will be front trading office or front office sales team of your IB, that is investment bank. Sales people develop new eligible trading relationships and manage the onboarding process for new accounts, including signing of the legal collateral documents, account formation, and ongoing sales transactions. Traders may execute these trades only with approved counterparties. Middle office में क्या होगा? Typically, they are responsible for risk and valuation measures. Once that particular client has registered in the company, then every detail of the client will be cross-checked along with his financial history. ठीक है, वो middle office वाले का काम. They will be even interacting with the collateral management team, ज़्यादातर credit analysis team on a daily basis. Legal department, they will be conducting negotiation, drafting and reviewing of all the agreements. Basically, they will be checking all the agreements. They will enforce collateral and other margin agreements, including initiation of collections and lawsuits wherever appropriate. Legal is required to sign off on all the written agreements. The jeweler is required to sign in that document. Okay, तब जाके वो agreement complete होगा. उसके बाद ही आपको gold loan मिल सकता है. Valuation team. This group processes are focusing on valuing illiquid or exotic collaterals and underlying trade positions that must be collateralized. Typically, these types of collateral and deals are thinly traded rather than liquid exchange traded instruments. So valuation is generally will be responsible whenever you are valuing any real estate transactions. Valuation करने आता है, पता है किसी को? फोटो खींचते हैं, that map देखते हैं, वो सब करते हैं, market price पूछते हैं, and और हमारा recommendation क्या रहेगा? 2-3 लाख और बढ़ा दो, ज़्यादातर, ठीक है? That 2-3 lakhs is such an amount that everywhere it will be getting infused. Okay. Then comes the account and finance team. They will be working with the middle office to calculate and account for all the profit and loss made through collateral transactions. They will even work with all the tax as well as the auditors of that particular company. Third party services, of course, any intermediary is there or not. Collateral management team, which will be working on Excel spreadsheets and dedicated softwares, delivering and receiving collateral, running the collateral operations, maintaining customer and securities data, liaising with the customers, service providers, and other parties in the collateral chain. So these are the collateral management team that will be comprising of. So just write it down, what comprises of a collateral management team. What comprises of a collateral management team?
Finally, there will be third-party service providers like consultants, auditors, tax specialists who will be helping both the entities, party and counterparty, to carry out this collateral transaction. Now, this is an important framework that is required from the collateral management perspective. यहाँ पे अलग-अलग data आएगा, product data. So, say for example, which different financial products are exchanged, market data, any market-related prices are getting carried over, legal agreement, client data at both the ends, and the current positions. अब सेल्स क्रेडिट ट्रेजरी वाला ये सब ये देखेंगे, वैल्यूएशन करेंगे जितना भी that particular financial assets has been traded in a given transaction. Based on that, they will be having a contract set up between the party and the counterparty regarding what is the risk criteria, how much has to be the allocation for collateral, what is the margin call, what will be the settlement process and reconciliation process, what will be the interest in the charges, and finally that will be managed by accounting and settlement departments. कोलैटरल मैनेजमेंट में रिस्क क्राइटेरिया, ऑफ कोर्स अगर कोई सिक्योरिटी का भाव बहुत ऊपर नीचे हो गया, देन इन द एक्सट्रीम केस कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए, दैट इज टू बी मेंशन इन द कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट. 1. सेकंड, कितना कोलैटरल एलोकेशन चाहिए, 100% पूरा, 80%, 70%, उससे ज्यादा नीचे तो नहीं होगा. थर्ड, margin call. Margin call is always when you are utilizing complete 70% and you are not able to provide any other extra collateral in support. Then bank has to initiate that margin call. मतलब for example, आपका margin आपने collateral provide किया था, आपने लोन लिया है 1 लाख का, 70% was the collateral allocation, 70,000 हो गया. Now imagine that particular collateral value skips down to 15,000, तो 85,000 निकल गया वैल्यूएशन में से. तो जैसे ही वह 70,000 के ऊपर, मतलब बाकी के 30,000 थे बचे, लेकिन 15 और निकल गए, तो जैसे ही क्रॉस होता है तो बैंक हैज टू इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट आपका पोर्टफोलियो या तो आपका जो भी फाइनेंशियल एसेट जो सरेंडर्ड है उसका वैल्यू इस पर्टिकुलर लेवल से भी नीचे चला गया, प्लीज डिपॉजिट द एडिशनल 15,000 इन योर अकाउंट. ये ज्यादातर तब होता है जब हम अपना पूरा पोर्टफोलियो सरेंडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कोलैटरल. 1 लाख का वैल्यू था, 1 लाख सब सिर्फ 15,000 हो गए, तो मार्जिन कॉल इनिशिएट करना था जब वो 30,000 के नीचे जाएगा. ठीक है. Interest in the charges, of course, if it is applicable in different cases. Reconciliation and settlement will be required only if you are managing from the accounting perspective. तो दोनों साइड्स फिर एंट्रीज भी तो एक्सचेंज करनी होगी. पहले कोलैटरल एक्सचेंज किया, फिर खत्म हो गई, लोन रिपे कर दिया, सब कुछ हो गया, तो वापस कोलैटरल सरेंडर करना पड़ेगा टू द बोरोवर. ओके. नाउ व्हाट टाइप ऑफ रिस्क आर देयर in terms of collateral management? So write down this important 5 risk factors. The risk factors associated with collateral management. Legal risk. So legal risk will be applicable. Say for example, we will discuss one by one, but legal risk क्या होता है? जैसे मान लो if your current government has asked कि आपको टैक्स पर, मैं फॉरेन सिटीजन हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट था यहाँ पे कोलेटरल के बेसिस के ऊपर, ठीक है, प्रॉफिट बहुत हुआ, तो अब इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से मुझे इनकम टैक्स पे करना था, से फॉर एग्जांपल 30% जो चल रहा है, हाई स्लैब तो वही है 30% वाला, बट ड्यू टू सम चेंजेस इन द गवर्नमेंट उन्होंने वो लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द टैक्स चेंज कर दिया, अब 30 का 40 कर दिया, तो मेरा तो 10% लॉस हुआ ना. It will be very less, but it will be applicable when such fundamental changes will be taking place in the financial system. Otherwise, इतना impact नहीं करेगा. Market risk are the global market factors affecting the market. कल ही देख लिया Nasdaq का impact over markets. Credit risk, so credit risk of the counterparty involved. Liquidity risk will be there when either the valuation of your current currency, जैसे मान लो अभी भले ही हम कहते हैं कि इंडियन रुपी स्ट्रॉन्ग है,
लेकिन अभी बहुत ही एक्चुअली वीक हो गया है कंपेयर टू यूएस डॉलर्स। गलती से 76 का चला गया 150, तो क्या होगा? हो सकता है ना, चांसेस आर देयर, लेट्स अज्यूम फॉर दैट, देन लिक्विडिटी रिस्क आता है पिक्चर में। ओके, एंड फाइनली देयर विल बी ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क आर एसोसिएटेड विद एनी in fluctuations in the system, or whenever you are recording the transactions in your internal systems, all the technical glitches and errors that will be taking place are known as operational risk factors. Okay, जब ये पूरा सॉल्व हो जाए तो सीनियर मैनेजमेंट को एक रिपोर्ट भेजना है, रेगुलेटरी कंप्लायंस वाले मतलब सेबी आरबीआई को एक रिपोर्ट भेजना है, और क्लाइंट को एक रिपोर्ट भेजना है, तब जाके आपका कोलेटरल का प्रोसेस खत्म होगा। ओके, now this is more of like a similar example where all the entities involved in the collateral management are being shown, whether it is cash trader or derivative traders, portfolio management or traders, or even portfolio managers will be exchanging all different types of instruments with each other. In that case, collateral has to be managed through inventory management, margin and collateral, reference data management, risk management, compliance and internal audit, and then reporting will be taking place. So basically यहाँ पे आपको inventory मतलब all the financial transactions that are being recorded, उसका एक inventory होगा या central database जिसको बोलते हैं, ठीक है? Why? Because just imagine a mutual fund, हमने बहुत सारे देखे, अब हर रोज उसमें कितना ट्रांजेक्शन होता होगा? You can imagine more than 500, 1000 transactions will be taking place, right? So you need to have an inventory of all those particular data. अगर गलती से भी misplace हुआ तो बहुत challenging situation होगा. To identify every transaction, we need to have reference data management that will be providing a unique identity or unique transaction ID number to every transactions. वो reference data management में दिखेंगे कि कैसा मतलब हर एक ट्रांजेक्शन को नंबर दिया जाता है, ठीक है? Both domestic and global level. Margin we have already seen, margin and collateral arrangement. Margin 30,000 के नीचे गया, additional collateral has to be provided, and risk management related to compliance or any internal audit procedures. In this way, how this particular collateral is working. This we have already written types of collateral: cash, mortgage-backed security. उसमें ये ऐड कर दो, letter of credit and gold metals. Add those two names. And also write one question: what is letter of credit? वो लिखा था, हाँ लिख के आया। अच्छा, we will discuss it. सिर्फ दो ऐड कर दो, लेटर ऑफ क्रेडिट, गोल्ड एंड हेवी मेटल्स। Done? Okay, also write this definition of what is collateral management. It is a technique which guides the counterparty on the terms and aspects of collateral transactions to be undertaken, and then write it down the features of collateral transaction. तो उसमें नीचे वाले जितने भी है वो लिखो, that are important. Just copy them.
Written. This also features of collateral management. वो ट्रांजैक्शन अभी भी समझ नहीं है, भेजा क्या? हाँ, लिखो। -300 तब दिखाएगा जब आपका एडिशनल सेलिंग हो गया पहले से, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो फिर वो MTM दिखा रहा है, दोनों में से एक। किस में है? जीरोधा में था। ओके, तो ऐसा था कि एक दिन पहले ले लिया था और दूसरे दिन, हाँ, तो वो माइनस में दिखाएगा, वो MTM, मार्क टू मार्जिन, इफ यू रिमेम्बर। तो मार्क टू मार्जिन में क्या होता है? फॉर एग्जांपल कल कौन सा, कल थर्सडे था, तो वेडनेसडे आप वेडनेसडे लिया था, ठीक है, कितना क्वांटिटी था? 1200, सॉरी 300 इंटू 4, ठीक है, इंटू 4, राइट। तो 1200 का हुआ, और आपने कौन सा प्राइस पे बेचा? फिर प्रॉफिट कैसे हुआ था? सेल करने के बाद सब 2 से 0 पे हो गया। No, then you are wrong. वो आपको मैं बताने की कोशिश किया था, डिसाइड 14 सेल का बोला था, बाय का बोला था? तो लॉस हुआ है आपको? हाँ, नहीं, आपका जो भी कैपिटल था आज आपको दिखा रहा है माइनस में कि प्लस में है? वहां से 4 रुपए बाय किए हो, 2 रुपीज पे सेल कर रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉफिट कैसे हो रहा है। लॉस हुआ 700 लॉस था। एक्सेप्ट करने के लिए आई डिडंट प्रेस एन एक्सेप्ट, ऑप्शन पे जाके आई डिडंट सोल्ड उसने नीचे एक और स्ट्रक्चर बनाया जहां पर उसने ब्रैकेट में क्लियर कर दिया, तो जैसे नीचे लास्ट रेट प्राइस नीचे जा रहा था तो वो शो नहीं हुआ। आई थॉट दैट वी गॉट एन ऑप्शन राइट टू सेल। इतना कैपिटल होना नहीं चाहिए ना, एक लॉट के लिए मार्जिन कितना चाहिए आपके पास? तो कितने लॉट के? कुछ तो गड़बड़ है नहीं? एग्जैक्टली, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कितना भी डीप आउट ऑफ मनी ले लो, 31,000 का भी पुट बेचोगे ना तो भी मार्जिन चाहिए। बाद में आफ्टर 300 सेल होने के बाद मुझे नहीं पता था लिमिट पर लेकिन वही मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, 4 रुपये पे आपने बाई किया है तो बाई विल यू पुट इट एट 2 रुपीज टू सेल? ओके, तो तब आपने दो तो लॉस हुआ ना फिर तो डायरेक्टली। कुछ नया टेक्निक लाया तो हमको भी बता। उसके बाद आई ट्राइड द सेम थिंग फॉर 35,000 आई बॉट देम प्रॉफिट था, देन आई सोल्ड देम। तो वो अगेन सोल्ड देम, तो उसमें प्रॉफिट हुआ है आपका? तो वो कौन सा प्राइस पे बाय किया? 35,300, 70 और हाउ 17? ओके, हाउ मेनी लॉट्स? ओके, मतलब 1700 के लिए 70 into 100। पहली बार 21 में सेल किया, हाँ, बाद में फिर से बॉटम में 28 में सोल्ड। हाँ, तो वहां पे प्रॉफिट हुआ है ना, इसलिए वो लॉस नहीं दिखा रहा है, वो 600। हाँ, श्योर, दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट हैज ओवरलैप टू दैट लॉस डेफिनेटली।
मैं वही सोच रहा हूँ कब से कि मतलब इनका प्रॉफिट कैसे जनरेट हुआ है। हाँ। हेजिंग में पैसा बनता है, लेकिन वो यू हैव टू हैव दैट पेशेंस। जब तक वो टाइम वैल्यू निकलना चाहे तब तक नहीं बनता है पैसा सेलिंग में। निफ्टी में सी डिफरेंट एक्सपर्टीज कहाँ पे आपकी डेवलप होती है। निफ्टी क्या होता है, बहुत स्लो मूवर है पहले तो कंपेयर टू दिस बैंक निफ्टी। सेकंड, बैंक निफ्टी ऐसा है कि जल्दी से फटाक से पैसा देगा। निफ्टी विल धीरे धीरे, दैट डोंट हैव पेशेंस इन दैट। अगर जल्दी मिल रहा है तो जल्दी लेके निकल जाओ, ट्राई टू वेट फॉर दैट। कितने ट्रांजेक्शन्स किए? मुझे वही डाउट हो रहा था कि यार इसको 100% मिल रहा था और ऊपर से 30% कैसे निकल गया इसका प्रॉफिट में से। 70% लिखा था ना बाद में आपने। आप तो होगा ना, इतने सारे लॉट्स को मतलब लेके घूम रहे हो और दोनों साइड्स गिनना है। बाय में भी कितने 10 लॉट्स हुए, अब एक एक लॉट का 20 रुपीज है तो 400 रुपए, तो ऐसे ही हो गए ट्रांजेक्शन के। तो ब्रेक, हाँ, तो 2 बार किया है तो होगा। रेंज ऑफ 30 मतलब up to age of 30, just to have the 490 plus GST once a year. एज ऑफ 30? age one, age achieve the ओके, अच्छा ऐसा ऐसा स्कीम निकाला है। लेकिन फिर देखना पड़ेगा कि उनका ये यूजर इंटरफेस कैसा है, क्योंकि नहीं नहीं भले वो करो, समटाइम्स जीरोधा इज मच मच फास्टर। आई डोंट नो अबाउट कोटक, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बट जहाँ तक मतलब अगर आप यूज टू हो जाते हो जीरोधा से तो फिर आपको अपस्टॉक्स कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। इसका बहुत इजी टू यूज इंटरफेस है। ब्रोकरेज लगता है लेकिन उसके सामने फिर वही है कि ट्रेड भी तो इजीली खत्म हो रहा है। तो आपका वो बाद में 2 ट्रांजेक्शन्स में प्रॉफिट हुआ है, पहले का तो डेफिनेटली लॉस है। ये ब्लड आ रहा है इमेज आपने जो भेजा है ना। और इतने सारे लॉट्स का करोगे तो ब्रोकरेज तो डोनेशन कैंप ही बन जाएगा। सीरियसली जीरोधा ऐसे थोड़ा कमा रहा है, हमारे जैसे लोग ही तो उसको मतलब डोनेट कर करके एग्रेसिव होके करते हैं। those first two transactions. तो दूसरे में लॉस कैसे दिखा रहा है? हाँ, उसका मैंने लास्ट को मैंने किया था और मैं संडे आपको दोपहर में प्रॉफिट हुआ है 2000 समथिंग, ऊपर एक 1700 का लॉस भी आ गया, 600 का। को वो पासवर्ड मांगेगा, पैन कार्ड होगा शायद।
सी -300 इसलिए है पहले तो क्योंकि आपका कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था, मतलब आपने परसों लिया था, तो कल जब आप खाली करते हो अकाउंट तो वो -300 दिखाता है। परसों में वो 300 बाइंग में दिखाएगा, परसों का भी तो एक स्टेटमेंट ऐसा आया होगा, परसों का 300, ठीक है। अब उसका आपका बाइंग प्राइस देखना है, उसका 4 रुपीस समथिंग, 4 4 रुपीस, तो इसमें नहीं है। जस्ट वांट टू चेक कि आपका प्रॉफिट सबसे बड़ा कहाँ पे हुआ है। वो लॉस में है, दैट 637 हैज टू बी काउंटेड एट लॉस। 1700 को भी लॉस में काउंट करना है, मतलब हुआ 2300। फिर एक ट्रांजेक्शन में आपका कुछ 2900 का प्रॉफिट हुआ, तो 600 हुआ नेट। और लास्ट में आपको 2100 का प्रॉफिट हुआ है, तो 2100 प्लस दैट पर्टिकुलर थिंग कम्स डाउन टू दिस। और 660 हाँ If you add 2100 and this 29 plus 637, if you add to it's not going to. तो या तो फिर उसका प्राइस कम होना चाहिए, अदरवाइज आई एम स्टिल नॉट गेटिंग इट। 300 का आपको सेल का जो कॉन्सेप्ट था वही अप्लाई करता हूं, पॉसिबल नहीं है। मुझे भी कंफ्यूज हुआ बाद में, मैंने सारे ट्रेड्स उसके कॉन्सेप्ट पे किए थे। इट्स नॉट पॉसिबल। सी यहाँ पे भी आपने 75 क्वांटिटीज बाई की थी 23.5 पे, उसका जीरो हो गया, एक्सपायरी था इसलिए। तो 75 इंटू दैट 20 राउंड ले लेते हैं, तो 1500 का, मतलब वो 1700 का लॉस हुआ आपका, ठीक है, वो जीरो हो गया। उसके बाद आपने कितनी क्वांटिटीज ली है, एक आपने कॉन्स्टेंटली बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल किया हुआ है, उसमें आपको 3000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। लेकिन कितने ट्रांजेक्शन हो गए वो तो देखो, उससे भी ज्यादा है, 660 का ब्रोकरेज है आपका। तो 660 डिवाइड बाई 20 कितना हुआ, 33 ट्रांजेक्शन हो गए। वो मैं समझ गया, -1300 प्लस 2900 विल बी 1600 एंड 1600 प्लस 21, सो दैट कम्स डाउन टू 38। तो 39 का टोटल है आपका, और उसके बाद उसमें ब्रोकरेज चार्जेस हो गए एडेड। हाँ वो मैं समझ गया, तो वो प्रीवियस वाला स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, मतलब जो परसों आपको आया हुआ है वो। बट दिस आर टू मेनी, 33 ट्रांजैक्शंस नहीं होगा, कुछ ज्यादा ही हो गया। 2 या 3 ट्रांजैक्शंस विल बी मैक्स फॉर द डे, बस दैट्स इट। और इतना करोगे तो फिर ब्रोकरेज में ही चंदा चला जाएगा। जस्ट इमेजिन वन रिटेलर इज पेइंग मोर देन 500 रुपीज टू Zerodha अक्रॉस इंडिया, तो कितना हर रोज कितना पे कर रहे हैं पता ही नहीं है। और उनको तो वो मार्केट का प्रेडिक्शन भी नहीं करना है, अब जाएगा डाउन जाएगा, कहीं पे भी जाओ भाई, हमारा ब्रोकरेज नहीं रुकना चाहिए। कंबाइंड इक्विटी रिपोर्ट करके एक स्टेटमेंट आता है Zerodha का, वो डेली बेसिस के ऊपर आ जाता है, वही हमारा सेटलमेंट रिपोर्ट है उस दिन का। वो 2 रुपए का जीरो हुआ वो पता चला, लेकिन फिर वो प्राइस देखनी पड़ेगी, या तो आपने जीरो पे उठाया हुआ है उसको, या तो फिर वो सेल किया है, तो फिर कैसे हुआ है वो, दैट इज अ मिस्ट्री। ऐसा कैसे इसने अलाउ कर दिया, तो पॉसिबल नहीं है। अभी भी फॉर एग्जांपल 32,000 का पुट अगर मुझे बेचना है ना नेक्स्ट एक्सपायरी का, तो इट इज आस्किंग अ मार्जिन ऑफ 80,000, हाँ वो भी एक लॉट पे, तो 10 लॉट का कितना हुआ। ओके
गॉट इट। एक्चुअली आपने बाय किया है 4.55 पे 300 क्वांटिटीज, ठीक है। तो 1365 आपका ऑलरेडी डेबिट हो चुका था अकाउंट में से, ओके। और आपने शायद बेचा है, जस्ट अ मिनट, आपने क्लोज किया है पोजीशंस 2.15 पे, तो आपका उसमें नेट लॉस हुआ 1300 माइनस 600 विच इज अ लॉस ऑफ 700 रुपीज। पहले लॉस काउंट किया हुआ है। जीरो में कैसा होता है, इफ यू आर टेकिंग अ डिलीवरी ऑफ एनी क्वांटिटी ऑफ कोर्स, तो मेरा बैलेंस तो माइनस होगा ना उसमें से, ठीक है। तो माइनस कितना, माइनस 1300, और आपने 4 रुपए वाला पोजीशन क्लोज कर दिया 2 रुपए पे, ठीक है। तो आधा हो गया ऑलमोस्ट। तो 1300 का आधा कितना, 650 हुआ। तो वो आपका प्रॉफिट नहीं दिखा रहा, वो लॉस ही है, लेकिन वो वापस कर रहा है उतना पैसा कि 1300 आपने दिया था, उसमें से मैं आपको 600 वापस दे रहा हूँ। 600 is counted as a loss. So that's how that 600 is getting added into your account. Actual profit आपके नीचे के ट्रांजेक्शंस के हैं, not that one. वहां पे तो लॉस ही है आपका। क्लियर? वो अकाउंटिंग एंट्रीज की वजह से कंफ्यूजन है। पहले डेबिट किया हुआ है पूरा 1300, जब वापस आपने 2 रुपए, मतलब जब जीरो जा रहा था आपको लगा जीरो हो जाएगा, तो दैट 2 रुपीज इज नाउ आपने बेच लिया, ठीक है। तो भले ही वो 2 रुपीज अभी भी एज इट इज रहे ना, 4 में से 2 बचे हैं, 2 का लॉस हो गया मेरा। तो 2 इंटू हाउ मेनी, 300 रुपीज इज योर लॉट साइज, तो 600 का लॉस हो गया। अब माइनस 1300, बाकी के पैसे तो वापस कर, ऐसा हुआ 1300 दिया हुआ है तो जो पैसे वापस लेते हैं ना, वो ऐसी बात है, इट्स नॉट दैट प्रॉफिट, ठीक है। जैसे एमटीपी चेंज हो रहा था, हां, लास्ट ट्रेडेड प्राइस जैसे चेंज हो रहा था, इसका भी प्रॉफिट माइनस हो रहा है। वो एमटीएम दिखेगा, वही तो मार्क टू मार्जिन है ना, हमने उसीलिए तो देखा है कि इट इज गिविंग एन इफेक्ट ट्रांजैक्शन वाइज। मार्क टू मार्जिन ऐसे ही होता है, ठीक है। तो वो कल आपको प्रॉफिट दिखाएगा, क्यों? क्योंकि वो ऐसे दिखाएगा कि आपने माइनस 300 क्वांटिटी आज किया है, तो 2 रुपीज वाला जीरो हो गया, लेकिन वो माइनस 300 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 600, दैट इज नॉट माई एक्चुअल प्रॉफिट, दैट इज जस्ट दैट अकाउंटिंग इफेक्ट बीइंग गिवन ओवर देयर, दैट्स इट। क्लियर? बाकी जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो 2900 प्लस 2100, वो दो जगह पे बड़े प्रॉफिट्स हैं आपके, तो वो 600 दिखाई नहीं दे रहा है आपको उसमें से। एक्चुअली वरना क्या होता, एक्चुअली ज्यादा होता, लेकिन आपने क्या किया, 1300 पहले पे कर दिया, फिर उसके बाद 600 आपने रिवर्ट कर दिया, लॉस में डाल दिया, तो 600 उसको उसने आपको वापस कर दिया फ्रॉम दैट कैपिटल। इन्वेस्टेड, इनिशियल इन्वेस्टेड कैपिटल वाज 1300, रिटर्न बैक इज 600। लेकिन वो प्लस दिखाएगा हमको, बट एक्चुअली वो प्लस नहीं है, वो माइनस ही है हमारे लिए। अगर वो 4 रुपीज के ऊपर जाता ना, तो वो प्रॉफिट में आता आपको। इसलिए तो मैं पहले बोल रहा था कि 4 रुपए पे लिया हुआ है तो उसको ऊपर तो जाना चाहिए ना, 4 रुपए के ऊपर। ऐसे कौन सा रिवर्स इफेक्ट दे रहे हैं ये लोग। ओके, so why collateral management in the modern banking industry? With increasing use of new technologies, competitive pressures in the institutional finance industry, and heightened counterparty risk faced in derivatives trading, collateral management has become an integral part of all the financial institutions. Why it is required? Primary reason, credit risk. For undertaking collateral is to averse all the debt defaults, currency and market risk, reduction of exposure in order to do more business. कुछ लोग ज्यादा ही एग्रेसिव होकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बोलेंगे 1 करोड़ का लोन दे दो, फिर डिफॉल्ट हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। डेरिवेटिव एक्सपोजर, improved market accessibility by collateralization of derivative securities and increased possibility of doing risky but exotic trades. ठीक है। Third is risk management, that is reduction in portfolio risk. Write one question. वो लिखा है what is capital adequacy? Okay, write it down. What is capital adequacy ratio? What is capital adequacy ratio? So collateral will also allow you to control the risk in the portfolio, reduce other operational risk factors, utilize the balance sheet entries to maximize the firm's resources and access to further capital from lending excess assets. So if you have more collateral, if you are still left with that particular thing, then of course you can get more amount of liabilities, but that valuation team's role will be important in all these cases.
अगर वो quality of this particular assets that are submitted for collateral management is not proper, then definitely it will going to impact the entire transaction. Now, which are the parties involved in collateral management? Credit analysis team, front office, middle office, back office, legal department, valuation team, accounting team, third party service and collateral management team. कैसे होता है प्रोसेस? आइडेंटिफाई द न्यू क्लाइंट, कंडक्ट हिज क्रेडिट एनालिसिस, कैसे? सिबिल स्कोर होगा या तो फिर कोई दूसरा अप्रोच, एग्रीइंग टू ऑल द एप्रोप्रिएट टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स, टाइप ऑफ एग्रीमेंट, कितने साल तक या कितने टाइम के लिए हमको रखना है एग्रीमेंट, बेस करेंसी दैट विल बी इन्वॉल्वड इन द एग्रीमेंट, टाइम ऑफ डिलीवरी. Sanket, his voice is not coming. So audible from my side. Okay, sir. Now, order. Okay. Qualification of collateral amount, interest rates payable over that, clearing and settlement required, and repo agreement in the case if it is being transacted in that particular transaction. So this is how your collateral will be done. Basically जब आप liabilities या loan वगैरह लेते हो तो उसके साथ ही collateral का फॉर्म दे देते हैं और आपको उतनी वो सरेंडर करनी होती है. Unless and until you don't surrender it, you will not get the liability amount that you are seeking for. Okay. Process in collateral management is the same: creating a new collateral relationship with your clients, identifying new client with the help of sales team, negotiate them and enter into a new collateral agreement, implement the new agreements, initialize the collateral process, and front office के trade तभी जाके execute होंगे. Unless and until the collateral agreement is not done or it is not prepared, it will be difficult to execute any of the trades as per the collateral agreement. Okay. Now, daily collateral operations process. The collateral management team's job is to continuously track, value, give, and receive collateral during the life of every OTC transactions. They need to manage collateral movements, tracking the net MTM valuation, making and fielding margin calls, and giving and taking away the collateral to minimize the credit risk. Why? If you have surrendered your equity portfolio as a collateral, then that portfolio's value will keep on changing every day. तो हर रोज आपको रिपोर्ट बना के भेजना पड़ेगा to the client, to the counterparty, and to your concerned authority in the organization. उसको हर रोज आपको अपडेट करना पड़ेगा कि आज पोर्टफोलियो का वैल्यू अप है, डाउन है. अगर बहुत डाउन चला गया है टू सच एन एक्सटेंट कि मार्जिन कॉल ट्रिगर कर देता है, आउट ऑफ 1,70,000 वाज वॉश्ड अवे, सिर्फ 30,000 बचा है, तो फिर यू हैव टू ट्रिगर मार्जिन कॉल फॉर दैट क्लाइंट. दैट्स मैंडेटरी. उसको बोलना पड़ेगा ऊपर से आप 70,000 अभी अकाउंट में डाल दो, जब वापस आ जाएंगे वी विल गिव इट बैक टू यू. ठीक है. Custody, clearing and settlement. So as per the agreement, one or the other counterparty may act as a custodian for cash and securities, or a third party custodian may be hired. It is essential to maintain separate accounts for all the collateral clients. The custodian manages collateral inflows and outflows, counterparty payments, interest calculations, haircut margin, dividend, and everything will be managed. Now this will be only possible when custodian is being hired by the client in a collateral transaction. So just write down one question: what is the role of a custodian? What is the role of a custodian in the collateral process? In the collateral process.
LIC का that grey market premium dropped to 30 rupees only from 70-80. 2 दिन ने पूरा सेंटीमेंट खराब कर दिया उसका. And still people will be in that optimistic view. ये यहाँ से डबल होगा, ये होगा, वो होगा. Valuations are bit high. वो तो मुझे पहले से लग रहा था. बस ये बेयर वालों का सपोर्ट चाहिए था डिस्काउंट में डालने के लिए, और वो काम कर दिया आरबीआई ने. फेड वालों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन आरबीआई ने कर दिया. Done. What is the role of a valuation team? The valuation team is responsible for valuing all the securities and cash positions held or posted as collateral. The duties affected by the valuation rules defined. This requires greater access to compare it, the valuation data, valuation models, and larger terms of qualified staff. Qualified staff मतलब experts होने चाहिए, which will value the collateral in a proper and appropriate manner. कोई जुगाड़ वाला नहीं चाहिए. इसका 20 रुपए है, इसको मैं 200 रुपए दिखा दूंगा. It does happen even today also in banking transactions. जिनको लोन चाहिए होता है बड़ा वाला 2 CR 3 CR, तो they will be providing collaterals of hardly 70-80 lakhs. बाकी का ऊपर जो होगा बैंक वाले देख लेंगे. Why? Because the manager has been taken something over from it. ठीक है, सबने कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है क्या? अच्छा, होता ही है. Now you can relate it. आज घर पे जाके बोल देना, लगेगा आपका भी इम्प्रूव हो गया परफॉर्मेंस. Valuation has been done on an end of day basis, but is now moving toward intraday and real time valuation. So real time valuation is of course important whenever you are dealing with multiple clients from multiple locations. आपके पास real time data होगा तो transaction processing time कम होगा. That's the only objective. ठीक है. Processing collateral, okay, margin calls and substitutions are there. ठीक है, चलो have a break. Urai baki, then we will finish with collateral. Next week we will first start with trade life cycle, followed with reference data management and ISDA. Last में फिर reconciliation ही बचेगा. ठीक है, reconciliation is a very small chapter. So what we will be trying is we will try to complete trade life cycle, reference data management and ISDA in the next week. अगर हो जाए तो सब एक साथ मिले, फिर reconciliation एक ही बचेगा. Online students, we will have a break and continue after some time. Yes, sir. कोलैटरल मैनेजमेंट के पहले एक और चैप्टर कौन सा पढ़ाया था सर ने? हेलो, असेट मैनेजमेंट. असेट मैनेजमेंट नहीं, असेट मैनेजमेंट के बाद ये पढ़ाया था ना कॉर्पोरेट एक्शन. उसके बाद कौन सा किया था लास्ट वीक, लास्ट लेक्चर में, सॉरी.
वैभव वैभव गांडू
कल मैंने असाइनमेंट भेजा सबको मिल गया टॉपिक मिल गया Online students, are you there? Yes, sir. Due to my personal medical emergency, I won't be able to continue with the session. Next week, if my aspirations are there, then next week का schedule we will decide accordingly. ठीक है? सर ने कुछ दिया तो कहीं तो कुछ होगा So we are closing up the session as of now. Is my voice coming, everyone? Yes, sir. ठीक है, तो अगले हफ्ते अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आपका सेशन उस हिसाब से रीशेड्यूल किया जाएगा एंड देन वी कैन कंटिन्यू ओवर हियर. ओके, गेटिंग माय वॉइस एवरीवन? Yes, sir. ओके, So can you repeat? Can you repeat? हाँ, हेलो. Yes, Saurabh, you were speaking something. Can you type in the chat box? Yes, sir. Can you repeat once again, sir? Voice cut हो गया था. Okay, I am typing a message. Is it clear to everyone? Yes, sir, it's clear. Yes, sir.